स्वदेशी रिसर्च सेंटर द्वारा भारत की अर्थनीति पर एक कार्यक्रम किया गया। अर्थनीति सलाहकार नागेश्वर राव जी ने वीडियो कॉल के द्वारा अर्थनीति के ऊपर चर्चा की। साथ में अग्रवाल जी ने जो भी अपना वक्तव्य दिया वह सुने कि वह इस काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। सदीनामा से मीनाक्षी सांगनेरिया आप सभी का स्वागत करती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Sound economic reforms. And China also had invested a lot in primary education and skilling. I mean, today, if you listen to the video of Mr. Tim Cook of Apple, he does talk about the availability of skilled labor in abundant quantities in China, which we don't have at the moment yet, notwithstanding our size. And also, when we talk of deregulation, I think we still are very reluctant to deregulate and let go. I think that is the important area of attention to unleash the animal spirits of our small and medium enterprises. We have done very well in many areas. For example, whether it is space exploration, whether it is in boosting our electronic and mobile phone exports, or even take the case of the game of chess. Now suddenly India has come up very well, producing a lot of young grandmasters. So there are many important lessons to be drawn from these success stories, whether it is in space exploration, mobile phone exports, or encouraging youth to take up chess, for example. Or in all these cases, there will be some common elements of success that need to be replicated in many other areas. I think if we can, and of course, China also had the benefit of a growing global economy, which India doesn't benefit from. So that is why if India is able to grow at 7%, it is probably equal to the 8 to 9% GDP growth that China was able to achieve in the last 30 years, because the global picture has changed. And not to our advantage, but somewhat to our disadvantage. And that is something which we cannot help. We have to play with the cards that we have been dealt by the global economy. And therefore, continued attention on the part of as I mentioned in my remarks, on the part of the government towards deregulation, private sector in terms of job creation and ensuring a fairer distribution of income between labor and capital, academia and the industry to collaborate on training and skilling, and the public itself, the households themselves, 20% of the economy. We can have a situation whereby agriculture could be 20%, industry could be 25-30%, and the services sector can come down to 50%. So that can be the right balance, and that is why I spelled out several action areas which can be taken to ensure that agriculture remains an important engine of growth. And I think, as I mentioned earlier, China was able to grow at 9%, but China's years ending March 22 grown at 9.7% in FY22, 7% in FY23, 8.2% in FY24, and now we are expecting somewhere between 6.5% and 7% according to the economic survey. The Reserve Bank of India expects slightly more than 7% real GDP growth. Clear and important reasons for India's growth is the way India managed the health and the economic fallout of COVID. India managed to vaccinate more than 1 billion Indians using domestically made vaccines, ensured that lockdowns were targeted, calibrated, and localized, which enabled economic activity to resume once the lockdowns ended. And then from the economic angle, the Indian government undertook measured, prudent, and calibrated and targeted fiscal and monetary stimulus. Now, the reason today the economy is on a stronger footing is because of these. Suppose India had undertaken a very substantial fiscal stimulus and a monetary stimulus, contraction in the financial year ending March 2021, but subsequent recovery would have been shallow. Today, inflation would be much higher. Interest rates would have been much higher.
And the kind of stock market boom that we are all enjoying today, including people with annual incomes of less than 5 lakhs of rupees having invested in mutual funds in the last 3 to 4 years, have seen substantial gains adding to their lifetime savings and net worth. None of these would have been possible but for Indian government's policy of fiscal prudence and fiscal consolidation, halving the fiscal deficit from 9.2% in the year ending March 2021 to 4.5% likely in the next financial year, in FY26. So, India has to continue to maintain policy prudence so that the real economy continues to grow. And more importantly, the financial side of the economy, as I mentioned in a CII forum early in September, the financialization of the Indian economy has to be carefully monitored. When we say that the stock market capitalization is 140% or 150% of GDP, it is indeed a matter of satisfaction. However, what are financial assets? Financial assets are nothing but claims on real goods and services. So when financial claims exceed the real output, then naturally there isn't enough real output to go around, and therefore financial assets go up in value. That is not backed up by real output. That is not a sustainable situation, and therefore we need to be very mindful that the economy grows more in tandem with the financial markets, or alternatively the financial markets grow in tandem with the real economy and not run too far ahead of itself. Risk management therefore is very important. Talking of risk management, सर, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा कोई पहला नहीं है। स्वदेशी शोध संस्थान कलकत्ते शहर में पिछले 25 साल से चल रही है और हम प्रत्येक साल ही जो हमारे देश के लिए स्वदेशी अर्थनीति से संबंधित जो भी विषय होते हैं उन तरह के विषय पर करीब 4-5 सेमिनार, वर्कशॉप, इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन जो है प्रत्येक साल ही हम लोग करते हैं। स्वदेशी से जो तात्पर्य है वो ये है कि हमारे देश की जो अर्थनीति है वो ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम एक इस तरह का वातावरण बनाएं ताकि गाँव का विकास, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन तक जो है हमारे आर्थिक विकास का फ़ायदा पहुँचे, और विशेष करके स्थानीय वस्तुओं का जो उपभोग है वो बढ़ना चाहिए, न कि विदेशी वस्तुओं का। क्योंकि आज जो अवस्था हो रखी है उसमें हम देख रहे हैं कि बाज़ार के अंदर में विदेशी वस्तुओं की भरमार हो रखी है। विदेशी वस्तुओं की भरमार होगी तो हमारे देशी जो उद्योग हैं और हमारे जो देशी जो लोग हैं, जो कारीगर हैं या आर्टिसन हैं या बाकी जो लोग गाँव में बसते हैं, उनकी वस्तुओं की बिक्री नहीं होने से सबसे बड़ी समस्या है उनकी बेकारी की और उनकी आय की। और जब तक उनकी आय नहीं बढ़ेगी, जब तक उनको एक सही ढंग से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, और वो लाभकारी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है वो कुछ बनावे चीज़ और उसका कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर मार्केट की फोर्स प्राइस पर बेचना पड़ेगा। और हम जो अगर विदेशी चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं तो देश में क्या है कि विदेशी हम मुद्रा में पेमेंट करते हैं और विदेशी मुद्रा तो हमारे यहाँ इतनी होती नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है वो वीक हो जाती है। और आज हमारा रुपया जो है एक समय 8 रुपया पर डॉलर हुआ करता जो 80 रुपया हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि विदेशी वस्तुओं पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। आज हम विदेशी तकनीक से बनी हुई, विदेशी पूंजी पर आधारित विदेशी वस्तुओं का जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको न तो उतना एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है और न उनकी उतनी आय हो पाती है। हम स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस विषय पर गवेषणा करते हैं। SRI तो पूरे बंगाल में ही इसका काम है, और स्वदेशी जागरण मंच हमारा जो है पूरे भारतवर्ष में ही है, और स्वदेशी जागरण मंच के
मोटे तौर पर स्वदेशी जागरण मंच का जो दिशा है और जो उसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है काम करता है, पूरे ईस्टर्न इंडिया में काम करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे देश के अंदर में हम स्थानीय वस्तुओं का जो है कंजम्पशन से बढ़ाते हुए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, इससे ही जो है लोगों की गरीबी और बेकारी दोनों समाप्त होगी और लोग जो है स्वावलंबी बने, उद्यमी बने, यही इसका हमारा उद्देश्य है। आज का आपका मोटिव क्या था? आज का जो मोटिव है, हमने वर्तमान जो आर्थिक परिदृश्य है और उसके आधार पर हम भारत एट 2047 में एक विकसित भारत जो बनने की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री ने ली है, तो उस विकसित भारत की जो क्या प्रारूप होगा और उसको हम कैसे अचीव करेंगे, उसके बारे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रोफेसर अनंत नागेश्वरन जी, उन्होंने भी इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कही है कि देश को अगर लॉन्ग टर्म में आगे ले जाना है तो हमको कृषि आधारित जीवन को और कृषि आधारित आय को ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल, मैं स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्देशक हूँ और स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय सह संयोजक।